Hi friends. So today we are going to welcome Malik, one of the most talented musical person that we have in our film industry, who's given us amazing music over the years. I will tell you about my connection and my friendship with him when he joins us, because I'm sure he has a few words to say on that too. So I'm going to request him to come in a minute. Okay guys, I'm not as savvy as I thought I was, so I'm waiting for him to join, and the moment he joins us, we will have a lot of fun and entertainment along with him. So Bharat, hi. So before he joins us, let's talk to each other. Vijay, I think Shivang Singh, Lalit Modi, okay, Urvashi, thank you so much. Love Bajaj, I don't know what your first name is. So I think let's wait now. Where is our friend? Okay, now I've sent him a message to join us. So friends, I have to tell you that when I started my career, I think, okay, here he is. Hi, Anu. Hello. How are you, Poonam? I'm good. I was waiting for you, and I think I don't I've want been to sending tell. you request upon request. Oh, I'm so sorry. I'm really not as savvy as I thought I was. No, So it's I have okay. to tell you that I'm going to I sit told. down. I'm going to sit down so that Okay, everyone be out there can see comfortable. me. Ah, ये मजा आ रहा है ना? That's it up. It doesn't look good. Okay, That I'll sit angle. up. Poonam, I'll sit up. वो अंजू की instructions आई हैं कि Yeah, sit up. yeah. Can you see me? Can you see me? Here I am. Absolutely, I can see you, and you're Can looking you move this? perfect. Okay, No. so Anu, I was telling our friends who have joined us on this chat today AC, that AC. lot of years have passed by since we first met, Yep. and we have been friends over the years. We may not have worked in as many films as maybe I would have liked to, but we've done plenty of films, and I like to Absolutely. believe that one of your first films, actually your first Hindi film, was with me, a film called Poonam. Poonam, if you remember, before we take it to the film section, I want to tell Yeah. everyone out there who's watching this fabulous show that Poonam Dhillon was the only star at that point of time who came to Annu Malik and Anju Malik's marriage. Oh, yes, of course. And So our friendship goes back from that time when you were now look not. at what I'm saying. It's quite a trivia for the people who are listening to us, that you walked in, you were absolutely radiant the way you are, and I was a struggler with no films, no big films. And I remember I'd composed music for Poonam, and you'd love the song Mohabbat Rang Laegi Janab Aista Aista, Jaise Rang Lati Hai Sharab Aista Aista. And you especially love that song, मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का. And Now, I was just to remind you कि वो गाना for me is more memorable because आप कहीं मुझे मिले थे स्टूडियो में और मेरी पहली गाड़ी जो मैंने खरीदी थी ब्रांड न्यू गाड़ी, उसकी आप पूरा ठेका लेके ठक 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 मेरी गाड़ी के but बॉनेट पे आप बजा रहे थे. Poonam, And ये आदमी कौन है मेरी गाड़ी तोड़ देगा. Poonam, And no, I tell you that was amazing. But the beauty of that entire situation, which I found myself in, was that the late Mr. Harmesh ji said, "Ki I've got Raj Babbar and Poonam Dhillon in the film." And I remember when I made this song, I wanted a voice like starts "Kaun hai" to say. So we had called one lady, God bless her. She came on the sets and I was recording, and you must understand where I'm coming from. I said, आपको सिर्फ इतना बोलना है, मैं नॉक करूंगा और आपको बोलना है कौन है, बहुत मोहब्बत से. So when that
she was a lovely person, but when she opened, when I heard her voice, when she opened her mouth to sing "Kaun hai," I said, "यार ये वो कौन है नहीं आ रहा है जो होना चाहिए." So I said, "Harmeet ji is not working." You won't believe it. We packed up for that word "kaun hai." We got back and we requested you to come. And I remember you came on the sets, and that day I just knocked. You said, "Kaun hai?" Arey Baba, kaun hai? The way you said it, everyone smiled, and the rest is history. फिर मैं वो गाना सुना देता हूँ. मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का आ गया दीवाना तेरा. मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का आ गया दीवाना तेरा. कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम ले ले दिल दीवाना तेरा. Again I said, कौन है? अरे बाबा, can you please say कौन है again? I'm going to knock. 1, 2, 3. कौन है? अरे बाबा कौन है? Ladies and gentlemen, Anu Malik live with Poonam. You know what? That song for me was the first time I actually gave voice, and after that you once convinced me in another song कि Poonam आप गाओ. Or of course I am not a singer from any, I mean I wish I was, I really wish I had a singing voice, but आप एक इंसान है जिसने मुझे 2 बार और अमित कुमार के साथ पहली बार और second time was it with Anil Kapoor if I'm not mistaken. Yeah. आपने निकाली थी जिसमें हम सब आर्टिस्ट को लेके. बिल्कुल. So you have been extremely ahead of your time. I think ये जो फिल्म एक्टर्स को लेके गवाना, उनसे अलग अलग नॉन फिल्मी एल्बम्स निकालना आजकल तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट आपने बहुत सालों पहले you started that trend. Yeah, Poonam, I always believed in doing music in a different way. Because आपको याद होगा when I entered, there were stalwarts like the great Lakshmikant Pyarelal ji, R.D. Burman, Kalanji Anand ji. They were doing such fabulous work, and I didn't know how to put a foothold into the door and ask a producer for work unless I could be completely different. So I started making songs. उस ज़माने में अलग था कि मैं English words भी लगाने लग गया. Like MAD, mad. जो मैं producer बोलते ये क्या है? मैं बोला सर MAD पर गाना बनाते हो क्या है? My adorable darling, I think of you every night, every morning. So they all woke up to me कि ये थोड़ा इनसे हट के आ रहा है. And I wanted to prove to the world that I can do this kind of music और मुझे भी काम चाहिए. And things started looking up. But I can never forget. Sorry, I can never forget when you came to my marriage. मैं बताना चाहता हूँ. That was the high point because I and Anju, I remember we पैसा जोड़ तोड़ के हम लोग ने शादी की थी. It was not easy. With no work, no producers. Beautiful. Terrace tha. And when you walked in, I said, wow. Everyone said, अरे पूनम जी आई है, पूनम जी आई है. And then I said, पूनम, आप कितना भी diet conscious हैं, आपको खाना खाना पड़ेगा. And we arranged a lovely thali. And then the way you ate all those lovely, there were those Gujarati thali ka. And you know, and your sister was there, Rishma. Yes. And oh my goodness, you have a memory of an elephant. She's a famous gynac, and I think she was eager to go back. I think she was studying very hard. So she said when she started eating the food. So our relationship goes back. I mean, you saw me standing on the reception, वहाँ खड़ा with my wife, and there you were. So it's a very emotional bond. And then your son's name is Anmol. My daughter's name is Anmol. Now what can we say? I know that bond, and both of us didn't know. मुझे याद है पहली बार when our kids met, I think वो retreat या ऐसा किसी होटल में swimming के लिए बच्चों को लेके गए थे. And I said, this is my son Anmol, and he said, my daughter Anmol. Like what? So I think हमारा bond बहुत connection But है. आप मेरे बारे में पूछ रही हैं. I want to tell the world कितना आपने जबरदस्त काम किया. मैंने एक tweet भी किया था recently after your tweet to the world that the music that really made the world sit up and take notice of me. The world sat up when we did a film called Soni Mahwal. And absolutely, that's a memorable music है वो. हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ, I have always stated that nobody could ever play Soni better than you.
there was, you know, for me, when Umesh ji told me that, I said, who's the heroine? I won't go into the nuances. उन्होंने पूरी story जो बताई थी, how you came into the picture, was also amazing. But when he told me it's you, I saw you, I said, I remembered, I told Umesh ji and I told Bakshi uncle, I said, ये सोनी का चेहरा है और गाने यहाँ से बनने वाले हैं. And I remember when I made the first song, which is legendary, which Umesh also shares, that my gurus were supposed to do the film. Lakshmikant ji and Pyarelal ji were supposed to do the film. And yeah, but I love the title Soni Mewal so much. So when Umesh ji time nahi dete the milne ke liye, so one day I cornered him in the loo, which is a very famous, now it become legendary. Or in the loo, I said, hi, I'm giving music for your brother's film, Ek Jaane Hum. But राजीव मेरा पहले बना रहे थे एक जाने हम. तो बोलता हाँ यार, I know you, I know you, I know you. तू यहाँ क्या कर रहा है? I said, look, मेरे पास एक मुखड़ा है. Keeping your heroine in mind, I've got a मुखड़ा. बोला कौन सा मुखड़ा? And I said, सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी. I went on singing, सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी. रब से ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ. He got so elated, he said, just go out of the bathroom. I want to talk to you. I stand outside the loo and he comes, he catches my hand, takes me to McDonald's. McDonald's Bandra mein. McDonald's near Mehboob studio. He was recording in Mehboob. So McDonald's, yeah, we used to eat Chinese food there. That was a beautiful restaurant. We went there and wahan usne mujhe bola, I want to give you a signing amount. And what did he give me? A chicken sandwich. A chicken sandwich was my signing amount. फिर हाथ पकड़ के we went to Anand Bakshi. We went to Bakshi uncle's house, and there he said, "सुनाओ, गाना सुनाओ." And I started humming, "सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ." And then Bakshi uncle added this line, "रब माफ करे, मेरा इंसाफ करे." And I want to tell the world out there that the way you were looking in the film, आज भी, when I look back and see the way it was picturized, that the way you and Sunny looked as a pair, as Mahi and Soni, I don't think, मुझे लगता है कि सोनी होगी तो ऐसी होगी, आप जैसी. No one could have played that role better than you. Thank you. It's one of my favorite films too. और अगर वो फिल्म मुझे नहीं मिलती तो मुझे बहुत अफसोस होना था, because I think I was right suited for that role, and I know I was the second choice, but I think Umesh was lucky that. Okay, now I have to ask you, अनु, अक्सर आपने बोला ये मुखड़ा आपने सुना दिया, हाँ आगे नहीं, आपने ये मुखड़ा उमेश जी को सुनाया, पर मैं जानती हूँ कि अक्सर गानों के मुखड़े आप खुद ही लिख लेते हैं, और जब आप जाते हैं डायरेक्टर के पास, there's a very catchy मुखड़ा you always have. Is that a अनु मलिक स्पेशलिटी कि मुखड़ा लेके जाते हैं और आदमी ज्यादातर उसी के साथ चला जाता है? No, it's a fact. I won't deny कि ज्यादातर मुखड़े जो आए हैं, except when I worked with Javed Saab, Anand Bakshi Saab and Gulzar uncle, they have come out with their own mukhras, I'll be very honest. And in fact, I've composed music on their words. उन्होंने पहले गाने लिखे हैं, and then मैंने tunes बनाई हैं. But ज्यादातर जो मेरे मस्ती वाले गाने आपने सुने हैं और रोमांटिक गाने, like चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, was a मुखड़ा written by me completely. ऊंची बिल्डिंग is written by me. एक गरम चाय की प्याली was written by me. आजकल बारिश हो रही है तो देखो बारिश हो रही है. The mukhras, I love to write the first lines, and they work. For example, I remember coming out with the line, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई. इनफैक्ट वो अलका हमेशा जब भी मुझे मिलती है, मैं उसको बोलती ये गाना मेरे को दे, क्योंकि मैं थक गई हूँ यार, हर बार तुम मुझे बोलती रहती हो यही गाना गाने के लिए. आई लव दैट सॉन्ग एंड इट इज सो मेलोडियस. तो दैट इज योर स्पेशलिटी. नो, आप मेलोडियस रोमांटिक गाने भी, मस्ती वाले गाने भी और सेक्सी गाने भी, हर टाइप के गाने आप करते हैं. सो हाउ डू यू गेट सच अ वैरायटी? Poonam, the thing is, I told you that when I grew up when I was only 7 when I heard, I was 8 or 9, I was 9 when I heard Dam Maro Dam. When I heard that, I just freaked out. And I said, who's this?
and the way the music was recorded by Panchamda. And then I heard Amar Prem and I said, wow, these are guys, this is a music composer who can do a Tisri Manzil and a Hare Rama, Hare Krishna and also an Amar Prem. I want to be like him. I mean, there are great composers in the industry and I respect all of them. But after having said that, here was a man experimenting. Here was a man trying to change the world of music. Yeah, so I started when if you know my music today, एक तरफ अगर बॉर्डर है, एक तरफ रेफ्यूजी है, तो एक तरफ मेहुना भी है, एक तरफ बाजीगर भी है, एक तरफ पूनम भी है. I've done ghazals. In fact, हमें सुनाना चाहिए लोगों को गाना. That Mohammed Rafi Sahab, the great legendary singer, I was only 18 when he sang 3 songs for me. And really? I didn't know that. मैं आपसे यही पूछ रही थी आपका पहला गाना किस उम्र पे आपने रिकॉर्ड किया था? I was only when I started out, I was 14 and the film was Hunter Wali 77 and उसमें डैडी का गाने थे, लेकिन Mr. Mohan Choti said मुझे एक गाना अन्नू से रिकॉर्ड करना है and I was surprised. डैडी said कर लो and in a sling. उनका हाथ टूटा हुआ था. She had a sling, but she said तू मलिक का बेटा है, सरदार मलिक साहब का, मैं गाऊंगी. And she sang my first song. उसके बाद रफी साहब sang that song in your film. I'll hum it out. Down down da down down da da di da 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 di da 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 da. मोहब्बत रंग लाएगी जना आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराब आहिस्ता आहिस्ता अभी तो तुम कम सिन हो मोहब्बत क्या. So like that. But I remember this tune because Rafi Saab told me, he put his hand on my left shoulder and said, बेटा तुमने ये गाना क्या बना दिया इस 18 साल की उम्र में. And for me that was the biggest compliment because Mohammed Rafi put his hand on my shoulder. So sometimes when I miss him, I touch my left shoulder. So it was amazing and it was the song picturized so beautifully and you. उसके बाद फिर, if you remember the song, जरा मेरे हम नशी थाम ले मुझे थाम ले जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं मुझे थाम ले जरा. And the last song of Rafi Saab's life was again your film with me, Poonam. लागी लग जाए लोगो लगाई नहीं जाए रे ये अगन लग जाए तो बुझाई नहीं जाए रे बेलिया बेलिया बेलिया. So these all songs were sung by Rafi Saab. और आपका क्या कंप्यूटर ब्रेन है, आपको सब गाने याद है? मतलब वर्क हार्ड, मेरी मेहनत है, मेरा खून पसीना है. And I remember those days because मैं बाजा लेके घूमता था asking for work और उस पर एक शायरी थी कि मैं बोलता था सबको मैं गलियों का राजा मेरी दौलत मेरा दिल है और ये मेरा बाजा. हाँ, आप हमेशा से बहुत ड्रामेटिक थे वैसे. No romance. I am romantic to my music actually. Many people don't know my real romance. मैं आपकी प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूँ मेरी मोहब्बत. My first love and my aakhri love is always going to be music. I believe Saraswati Ma gave me this music for a reason. And luckily, Anju has supported me throughout because the first time when I met her, I was what? 16? And really? Yeah, I was what? Not even 16, 15 and a half. I just entered college 16. And I met her and I said, this is the woman I want to marry. And wow. And she supported my music. When she asked me this question, कि भाई, what do you want to do? I said, I love music. And she had no clue what to do. She comes from a Saraswat Brahmin family. She comes from people whose brothers are doctors and engineers. And I said, I want to compose. But she said, I'm with you. And that really
I said, why are you with me? She said, I know you'll become something in life. You'll do something. And for me, that was a huge statement at the age of 16. And rest is history. So I told her, Anju, it'll always be music first. She said, I'm with you. Because half the time you're talking to me, but then you're talking and you're composing. For example, when I'm talking to you right now, मेरे दिमाग में गाने अभी भी चल रहे हैं. So, You are a true, जिसे बोलते हैं ना, संकी जीनियस. आप whatever you may म्यूजिक call it. एकदम You may. दीवाने हैं. वो तो मैंने आपको देखा है बिगनिंग से ही. और ये आपसे एक जो तो सवाल पूछने हैं मुझे कि आप जब फिल्में और म्यूजिक और कंपोजिशन नहीं कर रहे होते और कोई लाइफ में इंटरेस्ट है कि नहीं, खाने का, पढ़ने का, पकाने No, का? I love, no, of course, I love reading, but I'm more of a, yeah, I love food, of course, I love good food. हम पंजाब से हैं, डैडी कपूरथला पंजाब के हैं, मम्मी राजस्थान की है, अंजू सारस्वत ब्राह्मण है, so obviously घर में, after recording a good song, I want my good food, but yes, we love traveling, I love traveling hell of a lot, बल्कि, I look for, unfortunately COVID चल रहा है, but I look for reasons to get out and travel. I love the mountains. I love the sea. And I think मेरा जो गाना बहुत चला, I was again, I had recorded the song only when I was 21. देखो बारिश हो रही है. So I'll hum it out to you guys. That's my first album song. This was made in Khandala. I remember एक वहाँ रेस्टोरेंट हुआ करता था called El Taj. अभी भी है. But my car went there and वो खंडाला कुछ और था because there were only few dotted houses and बारिश मूसलाधार बोलते हैं ना, बारिश हो रही थी, and my heart was totally flowing with musical romance, and I suddenly looked at the clouds, काले काले बादल थे, and from those black clouds एक छोटी सी ट्रेन निकली वहां से. And when the train started coming with the headlight on and the dark, Khandala was completely dark, और जोर की बारिश हो रही थी, and suddenly started singing, देखो बारिश हो रही है, oh देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining, मेरा दिल रो रहा है, देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining, तेरे लिए. And by the way, I had a fight, my first fight with Anju. So I had a fight with her, and I was in Khandala, and I thought she's not missing me. So I wrote the song for her. It's a fact. देखो बारिश हो रही है, देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining, मेरा दिल रो रहा है, देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining, तेरे लिए, तेरे लिए. So this is how my music is born. So if you want to call me a Sunki composer or a Sunki genius, I'm all game for it. You are absolutely, and I think all geniuses have to be slightly sunky, ना? नहीं तो फिर वो इतना अंदर से उभर के जीनियस कैसे आएगा? तो आपने ऑलरेडी कहा कि आप आर.डी. बर्मन से बहुत इंस्पायर्ड थे. I think we were all lucky to have him, and I think I had maximum number of films with Pancham Da. And every song of yours, what he composed for you was with Chintu ji, the great and late Chintu ji, याद आता है. I think वादा रहा was that song, ना? तू है वही जिसने मुझे अब न कहा. What lovely melody, and क्या गाया था, क्या कुछ नहीं. हाँ, 20 सितंबर का गाना. अभी मैं जो आप खंडाला की बात कर रहे हैं, वीक और 10 days ago, ये कोविड के मौसम में, क्योंकि 5-6 महीने से कहीं नहीं निकली थी, मैं पहली बार बाहर गई, एंड आई वेंट टू खंडाला. आशा जी वहां पे थी, तो आई वेंट एंड विजिटेड हर, एंड सारे रास्ते मुझे ये याद आ रहा था कि हमने यहाँ शूटिंग की थी, सितंबर फिल्म का गाना वहाँ शूट किया था मैंने चिंटू जी के साथ. And I think I was really blessed. I had music directors like LP, like you, like Pancham Da. I mean, खजाना of music. पर आप ये मुझे बताइए कि आप अगर आज के टाइम पे सोचेंगे कि आगे का म्यूजिक कैसा होगा, इतना मेलोडियस होगा, आप कितना आपने चेंज किया अपने आप को आज के स्टाइल के लिए, आज की जनरेशन के लिए? Are you inspired by international music and you try to bring that into your Indian music? Because
classical तो है ही हमारा मतलब that's our strength of India. But how do you manage to be different now in 2020? Poonam, let me tell you about India. You know it. You're an Indian. I know it. I'm an Indian. And let me tell you about our Indian brothers, sisters, friends, fans. उनके हिंदुस्तानी के हर एक हिंदुस्तानी के अंदर मेलोडी कूट कूट के भरी हुई है. कितना भी हम इंटरनेशनल बात कर लें, कितना भी हम कर लें कि you have an Adele right now, you have so many new artists that have come and you know, Justin Bieber का अपना एक fan following है. The way they are composing, Bruno Mars is someone I love very much. I've heard his stuff and I think he's fantastic. But after having said that, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं. I've seen supreme highs and double supreme lows and have had to fight back and come back. हाल ही में मेरी फिल्म, if you ask me what I want to do and how I really want to work on music, is nothing but melody. हाल ही में 2015 में I signed a film and 2016 I got this song got 3 national awards, राष्ट्रीय पुरस्कार. So a guy who started in 1977 at the age of 14 gets, you know, a song, and that is for Yashraj YRF film. So I've been a great fan of Yash uncle. और मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, unfortunately. But मैं उनको हर दिन मिलता था और हर दिन कहता था कि अंकल मुझे आपके साथ काम करना है. And I used to meet Adi also, but Adi had his own composers and everyone together. It so happened when I really needed work and I was down and out for work, it was Adi who called me and said, यार मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, दम लगा के हाइशा. And I want a contemporary love song. Now he used the word contemporary love song, कि जो आज की audience will also love. So when you talk about आज की audience, the ones who are hearing international stuff, the ones who are loving a new kind of a sound production, और एक लड़के ने live, Anu Malik had done only live music, you know. यहाँ it was the first time I had to reboot everything. And Adi, when he said कि मैं तुझे काम दे रहा हूँ, just impress my director शरद कटारे and my producer मनीष शर्मा. अगर तू उनको impress कर लिया, the film is yours, because I feel तेरे में एक बात है. And for me, I was completely without work, and for him to give me this film was like, I should not say this, but मरे हुए आदमी के मुंह में पानी डालने वाली बात. And I said, Adi, you are the true son of a very great man. आपने ये जो मुझे काम दिया है, let me do something. I remember it was 6 o'clock in the evening, and I'm going to come to the music of what kind of music do you want to make? I said he wants a contemporary love song. I sat down in his studio, बोला कुछ सोच. I came up with this tune, which I'll hum to my listeners and you also, which got 3 national awards. When he heard the song, he told a gentleman there standing with him, sign him up for the full film. And that was my first YRF film. मैं गाना सुनाता हूँ. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे. है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना. तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना. कैसे तूने अन कहा सब सुना. तू होगा जरा पागल,
तूने मुझको है चुना, खाली राहें हम आंख मूंदे जाएं, पहुंचे कहीं तो बेवजह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे. And you know this song, every Indian, in fact ये मेरा calling card बन गया आजकल. मुझे लोग बोलते हैं, they've forgotten how much I've created, and they say, sir, you're the one who made मोम के धागे. In fact, many composers who are so talented today, top composers rang me up and said, sir, आप ऐसा काम कीजिए. तो यहाँ यश अंकल का खून बोला. when Adi Chopra, you know, God bless him, Aditya Chopra, when he selected the song, and Sharad Kataria, they all hugged me actually. But that was this is a fabulous song. Yeah, thanks. And then देखिए अभी सुई धागा, उसमें मेरा गाना वरुण धवन, अनुष्का शर्मा बहुत चला. तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा, हाय तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा. So I think the industry could have used me better. They haven't still seen this side of Anu Malik. JP Saab did that with the Border, Refugee, LOC Kargil. And for that. And इतने awards आपने इकट्ठे किए अनु. So do awards still mean a lot to you, or just the song's popularity? You know, actually, awards mean a lot because they propel you, they take you further, and they inspire you. But जब जिस चीज को नहीं मिलता है, उसके लिए दुख होता है. For example, Border deserved the Filmfare Award as well as the National Award. नहीं मिला. That really shocked me because संदेशे आते हैं आज. Every second day, every moment I get Army people, Navy people, Air Force people सबसे ज्यादा बजता है वो गाना. जब भी कोई जवान की लाइफ में कुछ बात होती है, सबसे इमोशनल गाना वही है सबसे ज्यादा. इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, पता नहीं हर जगह बजता है. संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. So I love my country so much, Poonam, and the only way I can say I love India and I'm crazy over India is when I make this kind of music. मैं अपने देश के लिए बहुत गाने बनाता हूँ. You remember all those songs? सीमाएं सीमाएं बुलाएं तुझे चल राही, सीमाएं बुलाएं सिपाही. Or that song, कसम ली है हमने, कसम ना तोड़ेंगे, we love you oh India, तुझे ना छोड़ेंगे. Or the song, यहाँ की लड़की वाह वाह, बदन पे साड़ी वाह वाह, माथे पे बिंदी वाह वाह, होठों की लाली वाह वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा. Yo, East or West, yo, India is the best. East or West, yo, India is the best. So मैं ऐसी गाने बनाता हूँ because I love India. That was like, मतलब एक के बाद एक जो आपने, it is like intoxicating. Honestly, अनु, आपका जो म्यूजिक है और जो पेट्रियोटिज्म के गाने आपने बनाए हैं, I think nobody beats you to it. I mean, I don't want it to be a competition, but you will be remembered, I think, over the years. जब भी हमारा खास इमोशनल मोमेंट होगा, आपको याद किया जाएगा. But I really want to. हाँ बोलिए. एक चीज आपसे पूछना है. नहीं, आप पहले बोलिए. You are my guest today, and I want to hear Poonam, I really want to tell you that when you said about awards, so एक और एक फिल्म थी Ashoka, which starred Shahrukh and Kareena. उसके गाने, if you listen to the songs, that was not even nominated ever, and that really hurt me. That's the songs like गुलजार अंकल ने क्या गाने लिखे थे. रोशनी से भरे 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 नैना तेरे, रोशनी से भरे 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 नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे.
and brilliantly sung. I think it was Abhijit and Alka ji, and they sang their hearts out, and I wondered कि ये गाना क्या लिखा गुलजार अंकल ने, and शाहरुख पर क्या पिक्चराइज हुआ था, शाहरुख and करीना, and there were songs like रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, रात का नशा अभी. So people know me of एक गरम चाय की प्याली और ऊंची है बिल्डिंग, but they don't know मैंने ये काम किया है. And nowadays people come up to me and say लॉकडाउन में कि यार अक्स तुम्हारी है क्या? I said या, आपको पता नहीं? बोला आपने प्रचार ही नहीं किया. आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, फिर मारा रे तेरी आंखों ने मुझे मारा रे. So all these songs फिलहाल. What a khazana of songs, Anu. So there was this song from Fiza, again Gulzar uncle. तू हवा है फिजा है जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है क्यों पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ. तो आजकल तो लोग 5 गाने बना लेते हैं, दिस इज वाओ वी हैव डन इट, बट हम लोग इतना काम इसलिए करके आ रहे हैं बिकॉज वी नेवर वांट टू से वी हैव डन इट. आई स्टिल वांट टू डू मोर. I don't feel I've done it. That's your speciality. You still have the zest, enthusiasm and the hunger of a newcomer. वो मैंने देखा है. मुझे तो ऐसा लगता है कि I've not done anything and अभी मैं और 100 फिल्में करने को तैयार हूँ. अब बस चाहिए. Come on, let's start. In fact, मुझे ये आपसे पूछना है कि ये आपका जो childlike enthusiasm है, what is the reason for it? Do you remind yourself कि मैं हूँगा अनु मलिक, but I'm still hungry. I want to be better than everybody else. You are competing with yourself. Poonam, I have not grown up. I'm a child, and I'm a child at heart. For me, I love the fact that I love my music so much, and I live in my own world. Love me or hate me, but you can't ignore me. You know, I'm a person who has just fallen in love with his own world of music. I stay there. I live in that world, and I want to, and I really want to tell you, I want to make the world very happy because मैं देखता हूँ all around me, you know, लोगों के इतने गम हैं, इतनी तन्हाइयाँ हैं, इतनी problems हैं. I just want a smile on their faces. मैं शायरी भी करता हूँ, and when I became the judge of Indian Idol, I was the first person to start शायरी on a reality television show. I remember. I want to hear from you. आपने गाना तो बहुत सुनाए हैं. आपका No, I remember. अनु मेरा ऐसे you know शायरी कैसे आती. There was this सोनू जी थे, फरा जी थी, मैं था, and we were judging a singer. और वो जब सिंगर आया तो वो बड़ा डरा सा था. तो हमने उसने गाना, हमने बोला सुनाओ गाना, उसने सुनाया गाना. Suddenly we all felt सोनू जी ने अपना कमेंट दिया, भाई अच्छी आवाज है, थोड़ा और दम होना चाहिए. And सोनू has got a terrific ear for music. There was Farah who said कि अच्छी आवाज है, कुछ होना चाहिए मगर और थोड़ा कुछ होना चाहिए. When I looked at him, I felt ये आदमी की आवाज अच्छी है लेकिन इसकी कोई कहानी है जो हमें बता रहे नहीं है. तो मेरे मुंह से पहली बार निकला कि भाई ये कहाँ से रियाज करेगा, ये गरीब लगता है मुझे बहुत, इसके पास पैसा ही नहीं होगा, तो कहाँ जाके रियाज करेगा जब इसके पास पैसा ही नहीं है. दो वक्त की रोटी कमाने के लिए वो काम करता होगा. तो मैंने सडनली बोला कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है, भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है, आगे है जमाना फिर भी भूख पीछे पीछे, और सारी दुनिया की बातें 2 रोटियों के नीचे. You know, I got a standing, and that boy started crying, and I believe when audiences saw the show, they gave a standing ovation because it's the first time I'm praising a singer by saying कि तू अच्छा गाता है लेकिन तेरे पास कुछ है ही नहीं साधन कि तू रियाज कर सके. And then we came to know he paints walls. वो पेंटर है. And then Farah gave him a very good name called Painter Babu. आपको हम Painter Babu बोलेंगे. And the show was a huge hit in Channel 1. So I brought a lot of changes in a reality kind of television where I wanted to be अलग from the दुनिया. And then suddenly आजकल तो शायरियाँ चल रही हैं. मैं मस्ती वाली शायरी भी करता हूँ. ट्रेंडसेटर थे आप उसमें भी. Yeah, it was the first time. No one had heard a judge speaking through a शायरी. अभी हम मस्ती वाली शायरी, किसी ने बोला, किसी की लव स्टोरी सुन रहा था,
वो बोल रहा था कुछ शायरी अंदाज में कि सबको हंसाने के लिए, हमारी लव स्टोरी का अजीब एंडिंग है, हमारी लव स्टोरी का अजीब एंडिंग था, हमने उसे प्रपोज किया वाया एसएमएस, हमने उसे प्रपोज किया वाया एसएमएस, वो कमबख्त एसएमएस उसकी शादी तक पेंडिंग था. sad story. So I like to make people laugh. So I like to make people cry with my sad songs. I like to make people laugh with my shairis. I believe एक ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर है, एक बस चलाने वाला आदमी, वो जो थका मांदा घर पे आता है and he sits at home, his wife puts the meal in front of him, वो टेलीविजन ऑन करता है, वो अपने गम अपनी तन्हाइयां भूलना चाहता है. He is not here to, you know, he want, अगर वो रियलिटी शो देख रहा है तो he wants मस्ती. And I said, let me bring मस्ती. And I did that. Okay, आपके बहुत सारे फैंस इतना कुछ बोल रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, शायद वो नाराज हो रहे हो. क्या हम लोग बातों में इतने मसरूफ हो गए, सब आपको वाह वाह बोल रहे हैं. और किसी ने बार बार, आई थिंक प्रियंका है, उसने बहुत बार बोला है कि दम लगा के हईशा गाना गाइए. कोई उसका टाइटल सॉन्ग भी है, दम लगा के हईशा. वो बहुत मेरे को गा दिया, ये मैंने मोमो के धागे गाया है. फिर उसमें गाना था वो तू मेरी, एक गाना था उसमें, तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज उस पे बेकस, ऐसा कुछ लिखता हूँ ये खुलासा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, अरे जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा. So I want to tell the audience out there कि मैंने हर किस्म के गाने किए हैं, मैंने हर किस्म के I've done more than 400 films now. They say I've crossed 400 films, and I've worked with Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, to Kishorda. Kishorda के गाने तो मेरे इतने हैं, वो गाना बहुत चला था, बन के नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां. And the way Kishorda sang those songs, so I remember all the, and right from there, उनका कोई गाना ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है. He was Kishorda was huge. Okay, मैं ये फिल्मों से और गानों से हटके आपसे अभी एक आध सवाल पूछती हूँ. ये जो अभी चल रहा है ये पीरियड, हम सब बहुत स्ट्रेस हैं, घर पे बैठे हुए हैं, कई लोग काम के बगैर हैं, कई लोग नौकरी खो चुके हैं, कई लोग बेजार हैं, हर टाइप की इमोशंस चल रही हैं हमारे अंदर. आप उन लोगों को कुछ गाइड या सजेशन देंगे कि नेगेटिव और डिप्रेस नहीं होते हुए, वो म्यूजिक तो बहुत ही अच्छी राहत देता है, यू आर लकी, आप उधर घर बैठ के भी कंपोज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आदमी पॉजिटिव रहने के लिए? ये जो सवाल है इसके हजारों जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक जवाब है प्रैक्टिकल चाहिए, which I personally feel. मैंने अपने गाने के जरिए ही लोगों से सबसे पहले जब ये when it struck, and I remember that day when Honorable Prime Minister Modi ji told us कि एक महीने का जो we'll have to stay at home, but we ना उनको पता था ना हमको पता था कि it would extend to so many lockdowns. 6 महीने हो गए. Today when we are talking, we have completed almost 6 months. मैं सबसे कहना चाहता हूँ, before I even tell you what I did musically, कि this situation is here. Pre-COVID और post-COVID में जमीन और आसमान का फर्क होने वाला है in everyone's life. Yes. The most important thing is not to be disheartened in spite of every problem. जो प्रॉब्लम आज आपको है वो मुझे भी है, और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, बच्चे हैं, द फर्स्ट थिंग इज शो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. आई फेल्ट जब से मैंने काइंडनेस दिखाई है, इट हैज हेल्प्ड मी टू हील माई सेल्फ. आई वोंट नेम द पीपल, आई वोंट टेल यू दैट ऑन कैमरा, बट कहाँ से मुझे कॉल्स आए हैं. तो सबसे पहले तो फिक्र हमारी होती है, हम अपनी फिक्र करते हैं, अपनी पत्नी की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की फिक्र करते हैं. बट जहां से कॉल्स आए हैं एंड दे हैव बीन सो हार्ट रंचिंग, तो मैंने कुछ नहीं कहा है. किसी ने कहा अभी, आई बिलीव यू हेल्प, आई स्टार्टेड हेल्पिंग.
and whatever little capacity I can. और उससे मुझे बहुत चैन मिला है, बहुत सुकून मिला है. But I've not gone on camera to say this on television channels कि मैंने ये किया है, because there's no point. I won't even name the people. लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना जरूर नहीं है बड़ा पैसा देके. आपके नहीं, आपको उनको आप वो आपके घर के नीचे आप उसे खाना दे सकते हैं. आपके नहीं, आपके घर से वो निराश होकर नहीं जाना चाहिए. उसने अगर हम फोन किया है, किसी ने बोला है, और आप सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए उसको ये लिखने के लिए कि सर मैं तकलीफ में हूं. आप वो इंसान जब लिखता है उस वक्त my wife, my children, me, we have all stood there and we have helped, which is what we should do in this COVID situation. Apart from washing your hands, जो आपने सुना है कि आपको 4-5 बार हाथ धोने चाहिए, और भय निकाल देना चाहिए दिल से, because the moment you start thinking about it and you start getting worked up, it's going to affect your health. Instead of that, wash your hands, stay 2 meters away from the individual you're talking to, do namaste, do gargling, Arogya Setu app जो Honorable Prime Minister Modi जी ने कहा है, download that, find out the good things, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं, how to stay safe, and completely believe in the power of God and India. The greatest thing, and Poonam, I think you'll acknowledge this, and hats off to Prime Minister Modi ji and the entire team, कि recovery rates are fantastic in our country compared to what's happening in the world. आपको पता है population we have, in spite of that, we have 1.3 billion. उसमें से the way they've handled the situation, Maharashtra government has handled the situation so fantastically. So has the whole country, and we all are fighting collectively. मैंने notice किया है, every Indian, everyone is fighting, and everyone is helping each and every other person. और मैंने सब में देखा है, all are running out to help each and every person, and I think मैं यही कहूँगा. Spirit of India ना, migrants चल रहे थे, लोग घर से खाना बना के, पानी दे के. I think that is our Indian spirit. जो जितना भी हो सके, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा दें, अपने हिसाब से जितना मदद कर सके. We have to help. And मैंने गाने के थ्रू, मैंने गाना सबसे पहले मैंने ही गाना बनाया, उसके बाद कितने गाने बने, if you remember, मैं सुना देता हूँ. ये गाना मैंने जब बनाया, I made Kumar write it, मेरे दिमाग में ये लाइन आए, रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है, ये ना प्लान ये विधि का विधान, ऐसा कुछ लाइनें आ रही थी. तो ऐसे कुमार कुछ लिखना, तो कुमार then wrote some beautiful lines starting from रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है, अरे प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे ना मरेंगे, प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे ना मरेंगे, तू क्यों डरा है, तू क्यों डरी, हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी, तू क्यों डरा है, तू क्यों डरी, हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी, रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है. So don't worry, be happy, and also help others and take care of yourself hygienically, which is very very important. तो मैं सबको बोलूंगा कि डर तो है, डरना तो चाहिए इस बीमारी से. अब आप सडनली बाहर निकल जाएं, and so many people are, आप एक हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में आप सबके साथ पार्टियों पर जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. No, we still don't have a vaccine, we still don't have a silver bullet, हम मैजिक पिल हमारे पास नहीं है. So please, we have to all stay safe. और मैं और हाँ, पूजा, भगवान का नाम लेना भी बहुत जरूरी है, and helping everyone बहुत जरूरी है. To end this with to say कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन में सडनली लापरवाही मत करो, क्योंकि मैंने देखा है लोग करने लग गए हैं. और चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो, आप घर में रह के मनाइए ना. सेहत आपकी अच्छी रहेगी, आपके घर वालों की अच्छी रहेगी. जरूरी नहीं है कि हर चीज पब्लिक में करना है. हमारा देखो, महाराष्ट्र में गणपति का टाइम चल रहा है, लोग घर में मना रहे हैं, स्मॉलर स्केल पे करा रहे हैं. भगवान बहुत दयालु है, वो नहीं समझते हैं कि आपको इतनी बड़ी चीज करनी चाहिए. आप उनको एक बार याद रखिए, वही बहुत है. So I think that is something which is important. And while going, Anu, I have to ask you this. You have been somebody जिसको मैं अक्सर हेल्थ क्लब में देखती थी. हेल्थ एंड हेल्दी रहना आपके लिए कितना जरूरी है, और
आज के दिन में कैसा रहते हैं? You have always been fit. You have been on the treadmill. I've always loved trying to stay fit as much as I can. I believe at least 30 minutes का walk हो. I believe at least because मुझे ना, to be very honest, मैं खाने पर control नहीं करता हूँ. And actually मुझे अब लगता है I exercise to eat. So but don't follow me, please. Don't follow me. Please eat the right wholesome. नहीं, because I don't drink poonam. I don't drink. I don't take whiskey. I don't take beer. I don't smoke. तो मुझे मेरा एक weakness है. I have to experiment with all foods. वो Chinese हो, Italian हो. I love Anju's cooking. वो Konkani food बनाती है, which I love, and I just love eating out is a passion for me. Traveling is a passion for me, and being with the family is a passion for me. So I think these are very important things for me. जिंदगी में आज में आपकी बेटी की किताब है जो उसने भेजी है. I haven't finished it because my kids are reading it. मतलब आपकी बेटी सिंगर तो है ही है. उसने कितना अच्छा गाना गाया था, आपने जो उससे गवाया था गाना. She's not pursuing singing as much, but वो writing कर रही है. Amazing. But Poonam, she is Poonam. अगर आपने आज अनमोल की बात छेड़ी है, she is very वो खुददार लड़की है. वो मुझे बोलती है, डैडी if no one asks about me, you don't speak. अब क्योंकि आपने उसके बारे में बोला है, तो मैं बताना चाहता हूँ before we sign off that I've got two daughters, Anmol and Ada. Ada is a fashion, मतलब पूरा educated from Parsons. stylish and बहुत ही cool लड़की है. I've seen her over the years. अनमोल ने जो किताब लिखी है, I have done nothing to help her in this because I'm not a story writer. Experience because it talks about a child studying abroad. No. The best part is the university and No, but the best part is when she wrote this book, Three Impossible Wishes. मुझे पता भी नहीं था ये लिख रही है, बिल्कुल नहीं पता था. And the best part is she presented me the book saying it's released by Harper. मुझसे कुछ बोला. To me that is amazing, and this book is doing so well. It's loved by every youngster who's reading this book, Three Impossible Wishes. And it's a great feeling. Anmol Malik, and she's singing songs. जब अपने बच्चे का नाम देखो किसी चीज You know, I think, and she's done it on her own. So I felt very, very happy, and I have blessed her कि इसने वो दुनिया में कदम उठाया कि none of her in our entire family has ever written a book. Nobody. She's the first one. आपको लिखनी चाहिए एक किताब. Maybe you should write your fantastic journey. आपको भी एक किताब लिखनी चाहिए क्योंकि बहुत आपकी life. Poonam, I don't want. I'm not going to write my autobiography ever, but I've already written it for Anmol and Ada. उनको मैंने बहुत कुछ बताया, but I've told them not to publish it. And the best part is we are more as friends, more than even a father and daughter. Anmol and Ada को मैंने सब कुछ बोला है, everything. मतलब you won't believe this. My personal, my professional, I've recorded on a pen drive and I've given everything to them. Okay, they should know the true story of Anu Malik. And only they know who Anu Malik is. He's not only the father. Anmol knows everything about me, about everything. Mira. But I've told them. Your family over the years, Anu, मैंने देखा है. आप हमेशा you've been a family man. So proud of your girls. मैं Anu को भी girls कहती हूँ because absolutely. I've got three lovely ladies at home, and one my mother. तो चार हैं जो जिनकी मोहब्बत बहुत उनकी वजह से मैं हूँ. But I've told Anmol and Ada that she's noted down everything, and I said this is for you, but don't ever make an autobiography because I don't want to ever publish it. वो मेरी कहानी कमाल है. You can always change your mind. You can always change your mind about that at a later date. Anyway, thank you Anu so much. हम बातें करते जा सकते हैं, but I think I should let you go. I have to say thank you to you. And before I sign off, you have to speak about myself, but let me tell the world out there how talented Poonam Dhillon is. How what a great and honest human being you have been throughout the years. You brought up your children so well, and it's such a pleasure always meeting you and talking to you. Whether we meet virtually, now we are meeting virtually, or we have met at parties. But the moment you walk in, you bring a teaching है जो वो अभी कोविड के टाइम पे घर बैठ के अपना आर्ट कर रही है. She's a talented actor. Wow, my amazing. diploma. And Anmol मेरा बेटा जिसको आप काफी बार मिले हैं, and I know you like him very much. He is a very, very sweet, very tall, very
खाली मैं अगर 6'1" वो 6'4" तक पहुंच गया, मैं बोलता हूँ कितना लंबा है तू। वो 6'2" है जरूर, My and God. he's just in fact today वो अपनी dubbing के लिए गया हुआ है, and he's just completed his Please first. give my love to your beautiful children. And Yeah. Poonam, I must say thank you for having me over in your show. It was absolutely wonderful talking to you. It was a privilege, and I think you gave us so much musical input that it will go with us for a long time. Thank you, Anu, and we'll Thank touch you. base again. Absolutely. And lots of love to Anju and Ada and Anmol, and to your Thank you. mother. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye.